algebra of real functions. So we will discuss algebra of real functions. Just like we can add two numbers, subtract two numbers, multiply two numbers, right? Divide two numbers. Same is implemented with the functions. We can add two functions. We can subtract two functions. We can multiply a function by another function or a function by a scalar, and also we can divide two functions, right? The very first, these are the definitions only, right? You will be having related numericals also. Addition of two real functions. अगर f भी एक function है, g भी एक function है, then you have to keep in mind this result that f plus g of x will be f of x plus g of x. The addition of two functions will be adding the two functions separately, right? फर्स्ट फंक्शन में सेकेंड फंक्शन को ऐड कर देंगे. दैट विल बी द एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन. द रियल फंक्शन मीन्स फंक्शन f is mapping from x to set of reals. A function g is mapped from x to set of reals, be any two real functions, and x is also real but it is a subset of real numbers. Then the mapping f plus g, which is defined from x to set of reals by f plus g of x, is equals to f of x plus g of x. Similarly, if we want to subtract a real function from another, then this result you have to keep in mind that f minus g of x is equals to fx minus gx, where f is a mapping from x to real all set of reals, and g is a mapping from x to set of all reals. Then third is multiplication by a scalar, right? If we are multiplying a function by a scalar, scalar means a constant value, say alpha, then it will be alpha into that function. We will be doing it with the help of examples also, right? Then multiplication of two real functions. F g of x is equals to fx into gx. We will multiply, we can also multiply the two functions. Then quotient of two real functions. F upon g of x will be equal to f of x by g of x, provided we always do that what wherever we are taking the denominator as a function of x, that denominator should not be equals to 0, क्योंकि अगर gx 0 हो गया then the function will not be defined, right? So quotient of two real functions means fx upon gx, and that gx should not be equal to 0. These are the very simple definitions. Now we will be taking examples to solve this. So the first example is fx is equals to x square and gx is equals to 2x plus 1 be two real functions. Find f plus g of x, f minus g of x, f g x, f upon gx. This means we have taken all the four things: addition of two functions, subtraction of two functions, multiplication of two functions, and quotient of two functions. So what we will be doing, we will be writing first f plus g of x is equals to fx plus gx. This is by definition. Is equals to, the value of fx is x square, the value of gx is plus 2x plus 1. This is answer, right? Very simple. Then second is f minus g of x. F minus g of x. It will be f of x minus g of x is equals to x square minus in the bracket 2x plus 1. We will solve the bracket. X square minus 2x minus 1 is the answer for second. Then third will be f into g of x. This means by definition it is f of x into g of x. The value of f of x is x square. G of x is 2x plus 1. Multiply the two values.
2x into x square is 2x cube plus 1 into x square is x square. So the answer is 2x cube plus x square. Then the fourth is f upon g of x, quotient of two functions. This is f of x upon g of x. F of x is x square and g of x is 2x plus 1. Subject to the condition 2x plus 1 should not be equal to 0, which implies x should not be equal to minus 1 by 2. The x is equals to minus 1 by 2 value is taken from the relation 2x plus 1 is equals to 0. If 2x plus 1 is equals to 0, this implies the 2x is equals to minus 1 and x is equals to minus 1 by 2. So if we are saying that the quotient is x square upon 2x plus 1, this means the denominator value should not be equal to 0, and the denominator value should not be equal to 0 means x can take all the values except minus 1 by 2, right? So this is how to add two functions, how to subtract two functions, how to multiply two functions, and how to divide two functions. Next, we will take another example from your book, right? Again, it is very easy. F of x is root x, g of x is x, be two functions defined over the set of non-negative real numbers. Find f plus g of x, f minus g of x, f g of x, and f upon g of x. So again, so simple, f plus g, the important, you will mention this step. F plus g of x is equals to f of x plus g of x, right? Is equals to, put the value of f of x, it is root x, it is given, plus put the value of gx, it is x, and it is your answer. Then second, f minus g of x, again by definition it is f of x minus g of x, put the values, f of x value is root x and the value of x is gx is x. Then third, f g into x is equals to f of x into g of x is equals to root x into x. We can multiply the two values. Root x can be written as x raised to power 1 by 2 into x can be written as x raised to power 1. Now if the bases are same, we can add their powers, right? So it will be x raised to power 1 by 2 plus 1. 1 by 2 plus 1, 2 will be the LCM, 1 plus 2 is equals to x raised to power 3 by 2 is the answer. Now fourth, in this question, this is the only important thing, that how you are adding, multiplying root x with x. This is the only important thing, that you are making the bases the same and then you are adding the powers, right? Otherwise the question is easy, put the values and simplify. Then fourth question is f upon g of x. F upon g of x means f of x upon g of x, right? It means, we will take another sheet. So it is equals to f of x upon gx, which is equals to root x upon x. Because the value of f of x is root x, the value of gx is x. Now the only thing which is important, we have to simplify. Now we will not say that it is root x upon x and x should not be equal to 0. Okay, we will not write that, because we will simplify first. So it is x raised to power 1 by 2 upon x raised to power 1. The bases are same. When we are multiplying two bases, same bases, we are adding the powers.
But when we are dividing the same basis, we are taking the difference of the powers. It will be x raised to power 1 by 2. 1 upon x can also be written as x raised to power minus 1, right? This 1 upon x raised to power 1, which was in the denominator, I am taking x in the numerator and I am writing it x raised to power minus 1. X raised to power minus 1 means 1 upon x. So that in the next step, I will be taking sum of these two powers. X raised to power 1 by 2 into x raised to power minus 1 means x raised to power 1 by 2 plus minus 1, which is x raised to power 1 by 2 minus 1. X raised to power 2 is the LCM. 1 minus 2. 1 minus 2. So it is x raised to power minus 1 by 2. Right? So x raised to power 1 minus 1 by 2 can also be written as 1 upon x raised to power 1 by 2, which is 1 upon root x, right? So this is also given in the question, x raised to power minus 1 by 2. Up to here, the solution is given, right? But you will be writing one more step. It is x raised to power minus 1 by 2 means 1 upon x raised to power 1 by 2. We are making negative power to positive power by taking this value in the denominator, which is equals to 1 upon root x. Now we have solved it and we have to define it. It will be 1 upon root x subject to the condition that x should not be equals to 0. Because if x will be 0, the value in the denominator will be going to infinity. Because 1 upon 0 is infinity, means not defined, right? So this way you have to take addition, multiplication. The things are easy, but the only thing is you have to simplify, right, the functions. Now we will take few more questions from your assignment which we have not Excuse solved. me, ma'am. Yes Aniket, बोलो. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ जी, पूछो. मैम y is said to be the function of x? Okay, this we will discuss after the class. Okay. Okay, ma'am. When y is said to be when we are saying that whatever the function is it a function or not? Yes, what, ma'am? मतलब means you're asking what is a function. मैम y को x का फंक्शन कब कहेंगे? जब if y will be satisfying two conditions. The very first, every element of a domain should have image, and not a single element of y should have two images. Then y will be a function of x. It Okay. okay. It is again the Yes. definition of function is implemented that y should satisfy the two conditions. If y is Okay. satisfying the two conditions, then y will be a function. Otherwise, y will not be a function. And function is a mapping from one set to another set. That is why we have learned sets first. Function is nothing but a mapping from one set to another set. Okay, Okay. Okay. right? Okay. Yes, ma'am. Any other doubt we will discuss after the class. No issue. Then we are taking third question because this type of questions we have not done till so far. A function f is defined by f of x is 2x minus 5. Write down the values of f of 0, f of 7 and f of minus 3. So we will be doing one question. So the things are easy, right? F of x we are given that it is 2x minus 5. So it is third question of your assignment, right? F of x is equals to 2x minus 5. Write down the value of f of 0, f of 7, f of minus 3. So when this type of question comes, then how you will solve it? F of 0.
you have to simply put the value of x as 0. 2 of 0 minus 5 is equals to minus 5 is the answer. F of 7, 2, the value of x is 7 minus 5. 14 minus 5 is equals to 9 is the answer. Minus 3, put the value of x as minus 3. 2 threes are 6. With this negative sign, minus 5 is equals to minus 11 is the answer. So this is how we will solve if a question of this type comes, right? The next question, fourth question, a function t which maps the temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit defined by t of c is equals to 9c upon 5 plus 32. Find t of 0, t of 28, t of minus 10. Again, this is the same question. We will find put the value of c is equals to 0, c is equals to 28, c is equals to minus 10. Find the value of c if t of c is equals to 212, right? This we will be this we will do now. Okay, the fourth question, t of c is equals to 9c upon 5 plus 32. 9c upon 5 plus 32. Find C if T of C is equals to 212, right? This you have to do. So T of 0 easily you can find by putting C is equals to 0. T of 28, put it C is equals to 28. T of minus 10, put C is equals to minus 10. But how to find the value of C when T of C is equals to 212? So it is also very simple. T of C is equals to 212. That means you will put the value of T of C here. So it will be 212 is equals to 9c upon 5 plus 32, which implies 212 minus 32 is equals to 9c upon 5. You will take 32 to the left hand side, which implies now 212 minus 32, 0, 8, and it will be 1. So it will be 180, 9c upon 5, which implies 9c is equals to 180 into 5, which implies c is equals to 180 into 5 upon 9. 9 twos are 18, 20 into 5 is equals to 100. So 100 will be the answer for this question. The value for c will be 100, right? So this way you will be solving this question. Now we will be taking the question of domain and range, the second question. Find the domain and range of the following real functions, right? It is already given to you that it is a real function. Real function means the range will be set of reals and domain will be subset of real numbers. Domain में भी real numbers होंगे, range में भी real numbers होंगे. That function which is containing real numbers in the domain and range, we are saying that function has a real function. Now we have to find the domain and range of f of x is equals to minus mod of x, right? So इस question को हम कैसे करेंगे? So we will be taking f of x is equals to minus mod of x on the set of reals, right? Reals means रेंज की जो वैल्यूज आ रही हैं वो रियल है और डोमेन में भी जो भी नंबर्स हैं वो रियल्स हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. And the question is find the domain and range. अब domain क्या होती है? If a function is a mapping from x to y, right? यहाँ पे f of x is equals to minus x का मतलब जो y है वो आपका minus mod of x है. This is your y, right? और जो f है ये एक मैपिंग है x से लेके minus mod x तक. इसका मतलब ये है
कि x की हर एलिमेंट कहाँ पे जा रही है, माइनस ऑफ मॉड x, राइट। इसका मतलब ये है f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y, और y की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस मॉड ऑफ x, तो x की हर वैल्यू जा रही है माइनस मॉड ऑफ x तक। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि डोमेन क्या हो सकती है और रेंज क्या हो सकती है। एनीवन? डोमेन क्या होगी, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स। रेंज क्या होगी, सेकंड सेट के एलिमेंट। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स मींस x की वैल्यूज, सेकंड सेट के एलिमेंट्स मींस माइनस मॉड x की वैल्यू, राइट। यही होगा। फर्स्ट सेट में तो वो सारी वैल्यूज जो x की हैं, और सेकंड सेट में वो वैल्यूज जो माइनस मॉड x की हैं, क्योंकि मैपिंग x से y होती है और y यहाँ पे हमारा माइनस मॉड ऑफ x है। तो डोमेन में x की वैल्यूज कौन सी होंगी, x की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। डोमेन क्या होगी, what value we can take of x, x is a set of real, right। तो x की मैं उस रियल नंबर्स में से, यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ पे होगा 0, राइट। यहाँ पे 0.5 मान लो मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, 1.5 ले लेती हूँ, हालांकि कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। ये मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ, 0.5, 1, 1.5, 2.5, 3.5, 0.00 समथिंग। दैट मीन्स एक्स की मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, कोई भी वैल्यू, राइट। और एक्स की वैल्यू कोई भी लेने का मतलब मेरी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक्स की इंटीजर वैल्यूज लेके बताती हूँ, हालांकि x एक रियल नंबर है, x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दैट मीन्स डोमेन में, डोमेन हमारी क्या होगी, r। r मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि x मैं फ्री हूं, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा सेट क्या है, x। x मीन्स फ्रॉम ऑल रियल्स टू रियल्स, मेरा फंक्शन रियल है, तो मैं x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकती हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे 0, -1, -2, -3 लिया, यहाँ पे 1, 2, 3 लिया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि अगर मेरी मैपिंग हो रही है तो मेरा हर एलिमेंट कहाँ जा रहा है, राइट। अब मेरी रेंज क्या होगी, डोमेन आर, क्योंकि मैं एक्स की कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ, एक्स रियल नंबर्स का एक सेट है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू का लेने का मतलब क्या है, डोमेन में भी सारे रियल नंबर्स होंगे। आई कैन टेक एनी रियल नंबर इन द सेट, राइट। सो डोमेन आर हो गई। अब रेंज, रेंज का मतलब क्या है कि जब हम मैपिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, 0 की मैपिंग कहाँ पे होगी, 0 होगी। -1, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ, राइट, y मेरा माइनस मॉड ऑफ x है, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी, -1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1 का मॉड, विच मीन्स -1। y की वैल्यू -1 अगर किया तो मेरी y की वैल्यू भी -1 की आ गई। अगर मैंने x की वैल्यू +1 ली, राइट, -1 मैप हो रहा है 1 में, सॉरी मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ, -1 मैप हो रहा है, सॉरी -1 ठीक था, -1 की मैपिंग -1 में हो रही है, राइट। अगर मैं x की वैल्यू +1 लेती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू +1 लेती हूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी होगी, 1 का मॉड 1 विच इज रिटर्निंग -1। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो भी मेरा जो फंक्शन है वो -1 पे जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेती हूँ, राइट, अगर मैं x की वैल्यू -2 लेती हूँ तो -2 का मॉड 2, 2 के आगे क्या लगा है, नेगेटिव, तो -2 की मैपिंग किसमें होगी, -2 में। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो 2 का मॉड 2 और आगे क्या है,
नेगेटिव, तो 2 की मैपिंग भी क्या होगी, -2। यानी कि रेंज में मैं x की वैल्यू चाहे माइनस ले रही हूँ चाहे प्लस ले रही हूँ, बट मेरे दूसरे सेट में या तो वैल्यू 0 आएगी या सारे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, क्योंकि मॉड के आगे तो क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन। तो x की वैल्यू चाहे माइनस पुट करो चाहे प्लस पुट करो, आउटपुट तो मेरी माइनस में ही आएगी, राइट। मेरी कोई क्या रेंज में कोई ऐसी वैल्यू है जो प्लस भी आ सके, कोई वैल्यू प्लस नहीं आ सकती। x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप, नो वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ऑल द वैल्यूज विल बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। सो दैट मीन्स मेरी रेंज क्या आ रही है, रेंज 0, -1, -2, -3, -4 and up to so on infinity. So this means is a set 0 to infinity. रेंज हम ये लिखेंगे, राइट, इज अ सेट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने, इट विल बी -infinity to 0, yeah, because all the negative values, right, 0, -1, -2 and so on infinity, और कहाँ पे खत्म हो जाती हैं, 0 पे। और हमारे पास रेंज में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो सकती, चाहे x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो। और x की कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, x की सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो डोमेन विल बी set of all reals and range what is the output. See, domain is input, range is output. तो इनपुट आप फंक्शन को क्या दे सकते हो, सारी रियल वैल्यूज, तो आपकी डोमेन सेट ऑफ रियल्स हो गई। आउटपुट आपकी क्या है, रेंज की, जो आपकी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, राइट। तो आपके पास रिटर्न क्या है, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। तो आपका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा ओपन, यहाँ पे 0, सॉरी, -infinity, -0 एंड 0 इज इंक्लूडेड, राइट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट बन जाएगी, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बन जाएगी, और सेट की फॉर्म में आपने इसको लिख दिया 0, -1, -2 एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज। अब अगर इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं इसको दोबारा से अच्छे से लिख देती हूँ। If you have any doubt, you can ask me. So it was -infinity 0. So this is clear how to find domain and range. Domain means what you can input, range means आपकी इनपुट के बाद आउटपुट क्या है। Fine. So we will do up to here. Next, the questions of domain and range you try at yourself. अगर नहीं समझ में आते we will discuss, right? तो एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपने चेक करना है डोमेन रेंज क्या होगी, और एक ये 5th क्वेश्चन है, इसकी आपने रेंज फाइंड आउट करनी है, और ये असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है, राइट। तो क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, बट स्टिल वी हैव 2 minutes. Anyone wants to ask any doubt, you can ask me. Aniket, is it clear to you what is a function? Yes, ma'am. फंक्शन क्लियर है ना। फंक्शन के लिए हम दो ही चीजें देखते हैं, एक तो डोमेन के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए, दूसरा जो है हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट के पास दो इमेजेस नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशनें Okay. फॉलो करती हैं तो जो वो हमारा जो गिवन रिलेशन है y is a mapping from y to x, that will be a function, otherwise it will not be a function, right? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay ji, so I will sign off the class now. Bye bye. Bye bye.